Rajasthan, I welcome you all for All India Roadshow on Women's Economic Empowerment through Entrepreneurship. On this auspicious occasion, we are pleased to have with us Mrs. Raman Sharma, Chairman State Commission for Women as our chief guest. We welcome you, ma'am. I would now request Mr. Siddharth Agrawal, President I Rajasthan, to welcome our chief guest and distinguished guests. Ms. Raman Sharma, our chief guest. White rose का मतलब समझते हैं? बताइए, मैं भाषा में समझाऊंगी। अच्छा किया आप लोगों ने जो white color की choose किया है। मैं सोचा इसके पीछे कुछ reason होगा। Ms. Trista Walker. Ms. Holly Flanagan. I would now like to request Sridevi, who's ED TIE Hyderabad, to present, and to Ms. Aprakuchu. Thank you. The Chairperson, Rajasthan State Commission for Women, our guests and mentors from US, Holly Flanagan, Managing Director, Gabriel Investments, and Trista Walker, President, Baldwin and Obinoff Incorporated, Ms. Apra Kuchal, Founder of WeCare, Ms. Archana Surana, Director, Arch Academy of Design, distinguished Indian mentors, Pooja Mukulji, and others, members of TIE, mentee participants, friends from the media, ladies and gentlemen. At the outset, I would like to specially welcome and thank our chief guest for the program, Honorable Srimati Suman Sharma ji, who kindly accepted our request to spare a valuable time with us today. This itself is a recognition of the step towards women entrepreneurship. Rajasthan has always been known as a land of entrepreneurs. For centuries, we have been in the forefront of business communities across the country and the globe at large. But at the same time, we have to accept, traditionally, women entrepreneurship has very low participation. However, things are changing and it has changed a lot. There have been a lot of efforts by different stakeholders, including the governments, to empower women socially. I, being an entrepreneur myself, believe that social empowerment cannot be brought in true sense without economic empowerment. In fact, a personal story, having my wife as an entrepreneur, my sister as an entrepreneur, my aunt as an entrepreneur, and the strangest of all, my bua, my aunt who stays in Varanasi, at the age of 60, producing a Bhojpuri movie, against all odds of the family, going to Bombay, staying in a rented place, not staying with the family, using all the different taxis, with Kumar Shanu and Alka Yagnik, and sending her 2 movies to Yashraj Films, and proving her point. Lovely. That's great. So I definitely trust the national policy of startup-friendly environment in the country, which would be a blessing for the female entrepreneurs, and instrumental in fighting gender stereotyping in the business community. The state government of Rajasthan has also come up with startup policy sometime back, which should help the budding entrepreneurs. To talk about TIE, the Indus Entrepreneurs, TIE Global, is one of the world's largest not-for-profit organization with the mission of fostering entrepreneurship. Founded in 1992 in the Silicon Valley, TIE Global focuses on generating and nurturing next generation of entrepreneurs through mentoring, networking, education, incubation, and definitely funding. TIE Rajasthan since 2002 is spearheading this endeavor of TIE Global in Rajasthan. In this series, TIE Rajasthan, under the aegis of TIE Global and TIE Women, is organizing this women entrepreneurship initiative called All India Roadshow on Women's Economic Empowerment through Entrepreneurship, the project called AIRSWEEE. Objective of this program is to unleash value creation among aspiring young women. Well, all women are always young in Tier 2 and Tier 3 cities in India by empowering them with knowledge of entrepreneurship. Under this initiative, TIE chapters at Coimbatore in Tamil Nadu, Warangal in Andhra Pradesh, Jaipur in our lovely Rajasthan, Nagpur in Maharashtra, and Durgapur in West Bengal are organizing roadshows in the form of workshops for women entrepreneurs. This project is being supported by the US Mission in India
the US Department of State. We are thankful to the US mission for selecting Jaipur as one of the cities to conduct this session. Under the agenda of the 3-day workshop, we have kept learning sessions, visits to academic institutions, visit to factory for nurturing entrepreneurship, and interesting and enlarging learning activities. I am sure all our mentee participants would be benefited of this unique opportunity. I urge you all to participate and take advantage of the presence of our mentors from USA and India. The mentors also come from different backgrounds with different stories, but the entrepreneurial zeal is the same in them. We shall learn from them a lot and shall teach them. I think that is the relationship of a mentor and a mentee, and that is true entrepreneurship. Before I close my talk, I was just reading Economic Times and a very beautiful article came across. Why your wife is a better investor. I'm just going to read a little bit of it. Women are more adept at ignoring market noise and maintaining conviction. They take a long-term view and largely follow a buy and hold strategy. Male investors tend to act differently. Their testosterone-laced minds lead many of them to believe they are India's answer to Warren Buffett. It not only pushes them to invest recklessly, but also prevents them from retreating if an investment goes bad. Selling stocks at a loss is seen as an admission of defeat, and the fear of ridicule prevents them from cutting their losses. So this is not against my male friends, but yes, that's truth. So thank you and great learning. I would like Archana to take over and talk about something. Thank you, Siddharth. And it's interesting that I'm sitting here in various capacities, and we have a beautiful, inspiring political leader, Suman Sharma ji, here with us. Despite a challenge of getting into a kind of a accident with her feet, she still made it possible because she is an inspiration for so many women. She's the chairperson of the Women's Commission of Rajasthan, and I'm glad that she's here amongst us today. Yeah. And when I look at TIE is a forum that has enabled my entrepreneurship. 10 years back when I joined the forum as an associate member, and in 2011 as a charter member. That was the time when we started with the TIE Stree Shakti. That was a special interest group for women. And it has moved on, but we have very few charter members in the space. So Siddharth has been really looking at how we can bring more charter members into the fold of the TIE, space. And we have a couple of associate members, but we'd like more women to come and join, be a part of the thing, because that's how the boardroom really gets interesting. So with TIE, definitely, because as he shared that entrepreneurship is key to this organization and mentoring is really at the heart of this work. I think this session on mentoring is going to be really important for all of us because it's going to give you an opportunity. And I believe 5 of us will get an opportunity to be then mentored by, further by US mentors. And we have such amazing experienced women here from the financial background and the marketing sales background. Both beautiful women, you see they're very young but highly rich on their experience. So you're going to experience them in the next 3 days. So, and I really look forward to you being at the Arch Academy of Design, where we're going to have a special session with them. They're the Women Mentors Forum, because I also represent the Women Mentors Forum. And how did it all emerge? Mentoring has been the key to all that being created. So Sumanji was there last year with us. We had 160 women walk together. This is a global event, and this year 134 cities in 60 countries will experience the mentoring walk. And the mentoring walk is where, women like them, they come together to pay it forward to the next generation of women leaders. And I want to acknowledge APRA here, because 2007, the program that I went on, the International Women Leaders Mentoring Partnership Program of the US State Department, the Fortune Magazine, and Vital Voices. And Vital Voices is an NGO, a very big platform which enables women like you and me to come in the forefront. They have Fortune women, CEOs, and in one part of their pocket, women like me, and then Malala-like women who are there. So it's a big, huge network of women across the globe. So when they were talking about how can we be a part of the thing, can you organize the mentoring walk in Philadelphia? I said you'll have to come into the fold of the Vital Voices network. So 2007, when India was first represented on the program, the mentoring program, I and a colleague from
Delhi, Rashmi, we too got the opportunity. I think Apra went 2 years back on the same program. And my mentor is a media icon who actually started the concept of the mentoring walk. When women asked her, why don't, I want your time, can you spend some time with me? She said, why don't you come for a morning walk? And that's how it became so big. So today a mentoring walk has become so big. So the whole gist of women paying it forward to the next generation is very key to women's empowerment and leadership. And I see TIE, being very significantly taking this up. Though we do not have in our membership fold many women, but we do request you that once you've been through this program and you see value, please do take up the associate membership. That's going to be the beginning for you. I learned a lot in my last 9 years being with TIE. And that's what I can say, that each one of you will grow because I have grown with this forum a lot. And that's why I'm sitting here today on this chair. Thank you so much, Siddharth, for having me involved. And I see a lot of faces who are familiar faces who have also part of the Women Mentors Forum, some of the alumni of Arch Academy, and our beautiful Shri Devi who's come all the way from Hyderabad to be with us. And Pooja ji is also a State Department alumnus. So all of us, we can connect, bond and take a lot of things together. Thank you so much. Amazing mentors, Sri Devi, Pooja, Mr. Ganesh, Mr. Singhvi and Arun. Thank you so very much for this amazing opportunity here in Jaipur, and I feel that it is going to be an excellent platform for you mentees to assimilate as much as you can in these 2.5 days. And here I've been given responsibility of talking on the benefits of mentoring. But before that, I'd really like to express my gratitude to the US State Department, to Vital Voices, for shaping who I am today. They have done such an amazing change in my life that I think I wouldn't have been the same person had I not been there for that program. And Archana would definitely agree with me that how beautiful these programs are. And she just mentioned about the mentoring walk, and I'm very happy to share that this year Archana has been doing the mentoring walk in Jaipur, and she's inspired me for so many years now. I also participated as a mentor in the mentoring walk, and this year I take it to Ajmer. So, a huge round of applause for Archana here. I feel mentoring is something which all of us begin at a very early age, and especially in India when we need to play so many roles of a mother, a father, a sister, a brother. It is something that is so much inbuilt in us. Also, I feel the social systems in our country, in India, it comes very naturally to us to kind of help someone or to kind of help them shape their future, shape their life. But in the words of Mr. Eric Parslow, they say that mentoring is to support and encourage people to manage their own learning in order they may maximize their potential, develop their skills, improve their performance, and become the person they want to be. And of course, all of us know mentoring improves relationships. It will help you to build your confidence. It will help you to build your skills. It will help you to strengthen the motivation which is somewhere lying dormant within each one of us. And it will help you make very important decisions in your life. And I feel when established women leaders reach as mentors to their young associates, they support and cultivate the next generation of women leaders. These same mentees often become mentors, and so on, the cycle goes on. And the surveys indicate that nearly 65% of women who have been mentored go on to become mentors themselves. I feel a significant body of evidence when I was reading also shows that mentoring is accelerating women's professional advancement. So when you step out of this room after 2.5 days, believe you me, you will be a very different person. Not that you will have some extra hands or extra some kind of horns here and there, but yes, extra capabilities and inner motivation and inner zeal that will help you to take very important decisions which were, I think, lying somewhere dormant inside you.
Also, emerging women leaders need to find mentors in senior leadership positions, which is very, very important. And that women who have already achieved top levels of success must make more concentrated efforts to empower other women. It is very important to take women along with you. It is very important to take your team. And I feel that it is a good idea to see them prosper and not to keep everything to your own self. The age-old traditions were to keep everything to your own self. When we saw that here in India, the businesses wherein it never used to come down, the tactics of the business, the secrets of the trade were never going down from generations to generations. But now, today is the day to share them, to explore them, and to also take a step collectively for them. And my dear friends, it is very exciting to be a mentee rather than to be a mentor. And when I was in US, being a mentor and shadowing two very important women, two very beautiful women leaders, one of them was Miss Karen Hughes, who was the Undersecretary at the time of President George Bush, and the other, Miss Ann Davison, who was the Chair of Crisis Management with Burson Marsteller. I think it really made a lot of difference. The time I spent with Dina Powell also, I think that has left so many things in my heart that I, on a regular basis, try to brush up those things. And here I'd also like to mention that Patty Sellers from the Fortune magazine, when you go back, please Google about her and read about her. What an exciting and what a knowledgeable lady she is. She said that life today is a jungle gym. It is no longer a ladder wherein you need to step at each step. It is a jungle gym. Try to grab the maximum opportunities. And once you try to grab them, you will realize in due course that you've become a master at so many things wherein you used to think that no, I cannot do it. And then will be a time to take a decision that yes, I want to do A, or I want to do C, or I want to do D. Many times we limit ourselves only because of our own certain clustered thoughts, own certain thoughts or parameters which are just blocking our way. Also, there are specific type of mentors in your life as you grow old. One of them is called the challenger. Somebody like your father in your childhood. A father is a challenger. So a challenger kind of a mentor is somebody who's going to push you to do hard work. He's going to really help you sweat into that detailing wherein you thought that was not important. And he is the person or she is the person who will help you to hit that milestone in your life. So my dear ladies, please look for the kind of challenger kind of a mentor in your life. It could be anybody. The second kind of mentor who's very helpful in shaping up your life is a mentor who's often the cheerleader kind of a mentor. So who's going to be a cheerleader kind of a mentor? A cheerleader kind of a mentor is an entrepreneur who gives you the motivation and the energy which is needed to persevere. Who's that kind of person in your life who gives you enthusiasm? Who's that kind of person in your life? Everybody has it. Mother, yes. A mother is somebody who's like a cheerleader in your life. And a mentor who's a cheerleader would actually do that. Then comes a mentor who's a kind of an educator. An educator who sees someone like an entrepreneur and he sees that desire in you, who's willing to sit down for hours and hours and give you the necessary teachings, from business basics to complex ideas to business practices. So this is your teacher, and generally the mentors lie in this category. But my dear friends, it is very, very important to have a balance of all kinds of mentors. It's not important that you have only one mentor in your life. Then comes the ideator. Are you dreaming big enough? Are you being as creative
as you can be. So the ideator kind of mentors loves to play the role of a thought partner as an entrepreneur who thinks critically about how to build a creative and differentiated business. Your life partner or your best friend could be an ideator in your life. And last but not the least, a mentor is a connector. So the connector kind of mentor who will open his or her own network, my dear friends, his or her own network to help you move in that direction of being a successful entrepreneur, and will really like to take your business forward along with taking you also forward. So these are the different kind of mentors. And also here quickly I'd like you to concentrate on a small little thing. A mentoring is different from a coaching. So these days when you spend here, please understand this is not any kind of coaching done here. This is a kind of mentoring done here, because the coaching is going to be focused on your task, whereas we are more concerned about your progress. A coaching would be usually absolutely, it will be an explicit feedback kind of a thing. Okay, fine, this is going wrong, please correct this. But a mentoring here will be an intuitive feedback. We will talk out of our experiences. We will try to tell you that these are the things which are very, very important. Also, a coaching is driven by a coach, but here it is driven by experiences of you as mentees and of us as mentors. Also, I feel that coaching develops skills, whereas for you leaders, we are here to develop your capabilities. Thank you once again, all of you, for your precious time. Thank you, Tal. Thank you, US State Department. Ms. Holly, MD Gabriel Investments, to say a few words. Talking about my own experiences and hopefully helping you think about some things around your own business. Just a few seconds about my own background and why this might be relevant over the next few days. So at home in Philadelphia, which is a city on the east coast of the States, if you're not familiar, just south of New York City, I'm responsible for a venture capital firm. So we invest in early stage entrepreneurship in companies that have had a little bit of progress. They have some customers and they're looking for funding to help grow their business. So I'm very proud that many of our companies are led by women. Not all of them, but many of them are. And I spend a lot of my time working with those companies to think about how they will grow their companies. A lot of my background is in sales, working at small banks that were acquired by large banks. And so I'll talk a lot about selling and the role of sales as we think about our companies. But on when I'm not doing things at the venture capital firm, I do a couple of other things. So I have a consulting firm where I work with private equity-backed companies around growth strategies. I'm the mother of 2 daughters, one of which is definitely an aspiring entrepreneur. I'm a proud charter member of the new Philadelphia chapter of TIE, as is Trista. And one of the other things I'm really excited about is the work that I do with entrepreneurs and mentorship in Philadelphia. So I'm part of several organizations, one of which is called the Circle of Aunts and Uncles. And what we do is that we have a group of folks who contribute capital to small companies that are sustainable and finding ways to add to their communities. So I actually have some good examples from the work I do there that I'd like to share with you all. But I'm excited to be with you all today and the next few days, and thank you so much for having me. Now, I would like to invite Ms. Trista Walker, President Warren and Obnoff, to say a few words. Thank you. I'd like to echo what Holly said. Thank you so much for having me. It's an honor to be here with all of you and to see so many smiling faces who are so excited about either starting their businesses or maybe for some of you going into growth phase in business. I am in my third entrepreneurial opportunity. First one was when I was 16. I had a skill that I taught, which I used to put myself through college. Second, I started my own company a number of years ago when I was working about 70, 80, 90 hours a week, and I decided that I could do this for myself instead of working for someone else. So I walked in and quit my job and started my company the next day.
Was very fortunate to get an opportunity to compete for a large client right away. And then landed that client through the course of that, met my business partner, and several years later we merged our two companies. In my role as president of Baldwin Nobinoff, I run a marketing agency, so I help companies launch themselves, launch new products, launch new opportunities in the marketplace, which I love. So not only am I an entrepreneur, but I love helping other entrepreneurs in the space. Our company is 35 years old. We're a certified women-owned business in the U.S., with the requirements of which are pretty stringent. We're 100% women-owned, which I'm very proud of. My business partner, instead of selling the company to a big company, which she could have easily done and retired, decided that she wanted the woman-owned legacy of the business to continue. So she went on a multi-year search for a successor, which is certainly the harder thing to do versus selling the company and walking away. So we merged our agencies, as I said, and we've been working together for the past couple of years. When I'm not running a company, I am the mother of 5. Oldest is 24, youngest is 16. Our middle boy is a freshman at NYU in New York City. My husband and I live in New Hope, Pennsylvania, which is about halfway between Philadelphia and New York, and as Holly mentioned, we're both founding charter members of the Thai Philadelphia chapter, which was just founded last year. And I also serve on the board of Jefferson Health System in Philadelphia, which is a $4.5 billion healthcare system. We own a network of hospitals, as well as several, a design and architecture school, as well as a medical school. When I joined the board, I was one of only 4 women on our 30-person board. And now I've just been able to bring another woman onto the board who was actually my mentor from early in my career, so I've been able to pay it forward. She was looking for an opportunity to serve on a board, so I was able to help the person that helped me very early in my career. I really love what Opera said about mentees and mentors, and I really believe that mentorship and being a mentee and a mentor is a continuum. It's not a point in time. And I consider myself not only a mentor, but still a mentee. And I'm always seeking out new opportunities to be mentored. And so as I hope to help many of you learn a few things, and I hope to learn from all of you as well over the next couple of days. And very much look forward to spending that time with you all. So thank you for having me. It's now my great pleasure to invite our chief guest, Mrs. Suman Sharma ji, Chairperson, Rajasthan State Commission for Women, to say a few words. Can I speak in Hindi? Yes. Thank you. Thai women के इस प्रोग्राम में हमारे साथ बैठी हमारी सखी मैं कहूँ, हमारी फ्रेंड कहूँ, और समटाइम मेरी मेंटोर कहूँ तो मुझे आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि हम बहुत सीखते हैं ऐसी महिलाओं से, हमारी फ्रेंड अपरा और हमारी फ्रेंड अर्चना। ये हम लोग की विमेन पावर है। मैं अगर ऐसा कहूँ कि जयपुर में अगर शक्ति के बारे में सोचने की और प्राउड करने का मोमेंट होता है, तो ऐसे कुछ नाम मुझे जयपुर में याद आते हैं जो आज आप लोग के बीच में यहाँ बैठी हैं। आई एम सो हैप्पी कि हम लोग सब जयपुर में रहते हैं। हमारे साथ बैठे हैं सिद्धार्थ, जिन्होंने इस प्रोग्राम को ये रूप दिया, और इस रूप में लाने के लिए हमें एक मेंटोर कहूँगी, नॉट अ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कि ही इज अ मेल और आई एम अ फीमेल। कितनी अच्छी बात है कि एक मेल मेंटोर हम लोग को मिल रहे हैं जो पूरे प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करके हम लोग को एक दूसरे को जानने की का स्पेस दे रहे हैं। तो थैंक यू सो मच सिद्धार्थ। और हमारे दोनों ही डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट इतने स्वीट हैं, और चूंकि अमेरिकन इंग्लिश मुझे कुछ समझ में नहीं आती है कि मैम ने क्या बोला, तो मैं अपरा से फिर उसकी डिटेलिंग लूंगी कि उन्होंने क्या बोला वेरी फास्ट, और मैं इतना जल्दी इंग्लिश को पकड़ नहीं पाती हूँ। ये मेरी वीकनेस समझ लीजिए या जो भी कहिए। कनेक्टिविटी तो बन जाती है, पर इतना फास्ट मैम, क्योंकि अमेरिकन इंग्लिश और यूके इंग्लिश में यही अंतर है कि यूके को तो पकड़ लेती हूँ थोड़ा थोड़ा, लेकिन अमेरिकन नहीं पकड़ पाती हूँ सर, तो सो सॉरी। एंड यहाँ हमारे बीच बैठी इस गुलाबी नगरी में सभी ब्यूटीफुल चार्मिंग लेडीज का मैं वेलकम करती हूँ,
एंड साथ में आप लोगों का भी जो मेंटोर्स हैं, क्योंकि बहुत कम संख्या में आप लोग हैं, पर एक अच्छी शुरुआत जयपुर में हो रही है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी अपरा को और आप लोगों को स्पेशली कि आप लोगों ने हमारे साथ ट्राई करने की कोशिश की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेंटर वर्क के बारे में जहाँ अर्चना बता रही थी तो मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ जब इन्होंने मुझे इनवाइट किया। मैंने कहा ये मेंटर वर्क क्या होगा, ये मेंटोर जो शब्द है मेरे लिए एक अलग ही वजह, मतलब मैं देखती थी मेंटोर मीन्स टीचर, यहीं तक मैं सोच पाती थी। इससे आगे जैसे अपरा ने कहा ना कि दिस इज नॉट कोचिंग क्लास, हम एक दूसरे को जानने के लिए यहाँ बैठे हैं, एक दूसरे को एग्जैक्टली दिस इज अ ट्रू वर्ड मैं कहूंगी कि यही है मेंटोर एंड मेंटीज के बीच की रिलेशनशिप को। क्योंकि जब भी हम कोचिंग एंड स्टडी एंड अदर थिंग में जाते हैं तो फिर शायद वो मोनोटोनस हो जाता है, और इस हिंदुस्तान में तो ऐसे सिखाने वाले हजारों लाखों लोग गली से लेके आपको ऊपर तक मिल जाएंगे जो इतना ज्ञान देते हैं जो पाले कुछ नहीं पड़ता है, पल्ले कुछ नहीं पड़ता है, लेकिन ज्ञान की कमी इस देश में नहीं है। हर गली हर चौराहे पे रिक्शा वाले के साथ आप हवाई जहाज तक सफर करेंगे तो आपको बहुत सारे मेंटोर मिल जाएंगे जो हिंदुस्तान में सो कॉल हम कहें, लेकिन एक्चुअल मेंटोर वही होते हैं। मुझे जो लगता है कि हर कदम पे एक विदाउट मैं यदि कहूं कि ऑनेस्ट रिलेशनशिप मेंटोर एंड मेंटी के बीच में जब बनता है तो वही रियल मेंटोर होते हैं, वरना कहीं प्रॉफिट एंड लॉस के रिलेशनशिप के साथ मेंटोर और मेंटी का रिलेशंस नहीं बन सकता है, जहां तक मैं समझती हूँ। क्योंकि हमें मुझ में जो स्किल है और मेरा मेंटोर अगर ये समझ जाता है कि मेरे को मेरे स्किल को वो समझ जाता है मेरी माँ और मेरे पिता के बगैर, क्योंकि बच्चे को तो माँ बाप अच्छी तरह से जानते हैं कि इसमें क्या गुण है, इसमें क्या गुण नहीं है। उसके अलावा अगर कोई नोटिस करता है तो ही इज अ रियल और शी ही जो भी वो है हमारे सच्चे मेंटोर, और फिर हमको ब्रॉटअप करना, बढ़ाना और हमारे स्किल को डेवलप करना। आई थिंक दिस इज द मीनिंग ऑफ मेंटोर। मैं कोई थोप नहीं रही हूँ आप लोगों को, बट महिलाओं के लिए इकट्ठी हुई हूँ यहाँ, आप सब इकट्ठे हुए हैं, और मुझे अपरा बता रही थी कि यहाँ वेरियस सेक्टर की महिलाएं बैठी हुई हैं जो सब अपने अपने घर के साथ, अपने अपने फैमिली के साथ और अपने अपने हम लोग सबको प्राउड फील कराती हैं। एक्चुअली देखिए कि मैं बहुत डिफरेंट सोचती हूँ, मेरी सोच थोड़ी सी अलग चलती है, और शायद मैं सोचती हूँ कि आप लोग सब लोग अग्री होंगे कि नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन मैं सोचती हूँ कि महिलाएं तो डे वन से ही मेंटोर होती हैं और महिलाओं से बेस्ट मेंटर हो ही नहीं सकता कोई। और विमेन एंटरप्रेन्योर की बात जब चलती है, ये आज के दिनों में जैसे टीयर 1 सिटीज में तो प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग वेल एस्टैब्लिश्ड होती हैं, उनको कोई एस्टैब्लिश करने की जरूरत नहीं है। बट टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज जो हैं, जिनमें जयपुर भी है और भी अदर सिटीज में, वहां बहुत जरूरी है विमेन एंटरप्रेन्योर के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करने की। और वही चूंकि एक्चुअल में वो लोग नीडी हैं, उनको जरूरत है। हम बेसिकली अगर किसी स्टैब्लिश फैमिली को स्टैब्लिश होते देखते हैं तो आई एम नॉट हैप्पी, मुझे खुशी नहीं होती है। टाटा बिरला एंड ठीक है, उनके यहाँ कोई अंबानीज एंड अडानीज में कोई लेडी एंटरप्रेन्योर अपने आप को कहती है तो मैं नहीं मानती। मैंने कहा क्योंकि उनके तो बिजनेस फैमिली ट्रांसफरिंग है वो, जो बेसिकली जमीन से उठ के। मैं आप लोग एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी, अर्चना को भी कहूंगी, आप इन लोगों को भी देखिए, इन लोगों ने भी बहुत मेहनत करी है, ऐसे नहीं पहुंची है, इंटरनेशनल नेम इन लोगों को ऐसे नहीं मिला। अर्चना ने डे 1 से बहुत स्ट्रगल किया है, तब जाके ये स्थिति मिली है। मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगी 1958 में हिंदुस्तान में गुजरात एक शहर है जहां एक सिटी है, मैं नाम सिटी का बोल रही हूँ, पर लिज्जत पापड़ के प्रोडक्शन में एक कमला बहन या क्या नाम था, कांट रिमेम्बर, पर कुछ ऐसा ही कुछ नाम था, या ना कमला बहन, हाँ या। तो उन्होंने उस समय 1958, आप इमेजिन कीजिए कि उस समय इंडिया के हालात कैसे थे। उस समय उन्होंने एक बिजनेस शुरू किया कुछ महिलाओं के समूह के साथ, और आई थिंक 80 रुपीज उनका जो अमाउंट था बिजनेस में इन्वेस्ट करने का, और आज नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे वो, आप सब लोग उस पापड़ को जरूर टेस्ट किए होंगे, सो टेस्टी पापड़, और मिलियन बिलियन में आज उनका बिजनेस चल रहा है। 8-10 औरतों के साथ उस कमला बहन ने बिजनेस को स्टार्ट किया। तो कहीं भी क्वेश्चन मार्क नहीं है कि विमेन एंटरप्रेन्योर हो नहीं सकती। मैं तो सोचती हूँ कि
पुरुष भी आज जो बड़े बड़े बिजनेसमैन बिजनेस टैग लेके घूम रहे हैं, उनके पीछे एक महिला का ही हाथ है, वो बिहाइंड द कर्टेन है, वो दिखता नहीं है। काम तो हम ही लोग करते हैं। अगर जब बिजनेस फ्लॉप होता है, सिद्धार्थ ज्यादा अच्छा बताएंगे, बहुत सारे दोस्त आपके बीच में होते होंगे, यू कैन क्राई। आदमी बहुत जल्दी जब बिजनेस में लॉस खाता है तो एकदम परेशान हो जाता है और इवन यहां तक डिप्रेस हो जाता है कि कमिट सुसाइड। कई केसेस हम लोग के सामने आते हैं, लेकिन उस समय भी अगर कोई उसके पीछे खड़ी होती है तो वो होती है एक महिला, उसकी पत्नी के रूप में, उसकी माँ के रूप में, उसकी बहन के रूप में, अदर रिलेशनशिप। और वो जो सपोर्ट होता है मेरे ख्याल से वो बिजनेस को बहुत ही मेजर बॉन्डिंग देता है। और फिर बिजनेस, आपने कई कहानियां सुनी होगी, मैं हैदराबाद से आप हैं, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मिसेस मूर्ति वेरी इंस्पायरिंग मी। मिस्टर मूर्ति इज नथिंग, इन्फोसिस आज बहुत कुछ है, अब तो उन्होंने छोड़ भी दिया, पर उसके पीछे यदि जब मैं उनको पढ़ रही थी तो मिसेस मूर्ति का ही, सुधा मूर्ति का ही मतलब मेजर रोल, किस तरह उन्होंने उनको बिजनेस के लिए, इन्फोसिस के लिए सपोर्ट किया और किस तरह ये एम्पायर बना और किस तरह उसको आगे तक ले जाना। तो बीइंग अ लेडी, हमें लगता है कि ये स्किल हम लोग में है, मुझे पहचानने की जरूरत है हम सब लोगों को। और वो समय आ गया है कि अब हम लोगों ने बिजनेस को अपने हाथ में लेना प्रारंभ किया और विमेन एंटरप्रेन्योर के रूप में चाहे अपरा हो, चाहे अर्चना हो, बहुत सारे नाम जयपुर में। लेकिन एक बात कहना चाहूंगी, चूंकि गवर्नमेंट की पार्ट हूं मैं, बीइंग अ विमेन, अगर मैं पॉलिटिक्स की बात करूं, क्योंकि मेरी बिलोंगिंग पॉलिटिक्स से है, तो ये जर्नी बहुत सरल नहीं होती, बहुत इजी नहीं है। आज देश में बहुत रिजर्वेशन है, बहुत सारे स्कोप्स हम लोग को मिल रहे हैं। छोटी पंचायत जिसको हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस कहते हैं या सरपंच का चुनाव कहते हैं, अब उसमें रिजर्वेशन आया। पहले कोई स्कोप नहीं था महिलाओं के लिए, हम दूसरों को लड़ा देते थे, खुद नहीं लड़ सकते थे। लेकिन आज गवर्नमेंट सेक्टर में भी महिलाओं को लेके कई योजनाएं ऐसी आई हैं जिसमें हम लोगों को पावर मिल रही है, हम लोगों को ताकत मिल रही है। और इसी का परिणाम है कि कई ऐसी सरपंच का नाम मैं बताना चाहूंगी जो अच्छी अच्छी बिजनेस छोड़ के सोशल वर्क में आना पसंद कर रही हैं और वहां भी वो कमाल का काम कर रही हैं। हमारी आसपास के ही कई सरपंच हैं, मैं उनको देखती हूँ, क्योंकि राजस्थान सरकार ने एक बहुत अच्छा काम किया कि उन्होंने इसमें एजुकेशन को मस्ट किया। अगर कोई सरपंच का चुनाव लड़ेगा या कोई प्रधान का चुनाव लड़ेगा या कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव लड़ेगा तो उसमें एजुकेशन को मस्ट किया। मिनिमम डिग्री रखी कि 10th और 12th। बहुत हंगामा हुआ राजस्थान में कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हुआ। अल्टीमेटली जब रिजल्ट आया, 50% रिजर्वेशन विमेन है हमारे यहाँ, अगर आप लोगों को पता हो तो उसमें जब चुन के महिलाएं आई, छोटी सरकार जिसको हम कहते हैं, बड़ा पार्लियामेंट तो हमारा सब लोग देखते हैं, सब लोगों को मालूम है, लेकिन छोटी पार्लियामेंट जो है वो हमारी सरपंच की दुनिया होती है। और वहां जब पढ़ के लड़कियों को ये मौका मिला तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि इतनी एजुकेटेड लड़कियां आई, कोई MBA, कोई BTech, कोई MTech, कोई अच्छी नौकरी, मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी छोड़ के सरपंच का चुनाव लड़ी और आज वो लोग इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। तो हम सब लोगों के लिए बहुत खुशी की बात होती है। पॉलिटिकल फील्ड भी मुझे लगता है कि हम लोग के बहुत ही ऐसा, बहुत सब कुछ इजी नहीं है अर्चना, बहुत ग्लैमरस वर्ल्ड नहीं है हमारा। आप लोग तो बड़े मजे कर लेते हैं, हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन अगर आप में क्षमता है और अगर आप अपने स्किल को पहचान ली और अगर कोई आपको अच्छा मेंटोर मिल गया तो आपकी राह बहुत सरल हो जाएगी और आप उस मंजिल को अचीव कर लोगे। बीइंग अ लेडी, मैं ये सोचती हूँ कि हमारी असेंबली में, हमारे पार्लियामेंट में जब तक मेजर रोल विमेन का नहीं होगा तब तक हम लोग डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होंगे, और जब तक डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होंगे तब तक हम लोग महिलाओं के लिए बहुत कुछ नहीं कर सकते। अभी डिसाइडिंग फैक्टर हमारे मेल ही होते हैं, तो वो मेल ओरिएंटेड सोचते हैं अपनी बातें, उसी तरह के रूल्स लाते हैं, उसी तरह के लॉज लाते हैं। जिस दिन इस देश में, कहने को हम लोग, हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर भी महिला रही, कई राज्यों में चीफ मिनिस्टर भी महिलाएं हैं, बट जो डिसाइडिंग फैक्टर है, जो बड़ा जिसको हम कहते हैं पार्लियामेंट, वहां हम लोगों की बहुत कमी है। हम उस दिन का इंतजार करते हैं कि जहां अच्छी संख्या में हम लोग सब होंगे, और आप जैसी महिलाओं को इनकरेज करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि वहां भी हमें प्लेस मिले, स्पेस मिले, ताकि आप लोग सब लोग को इनकरेज कर सके। एक बात मत भूलिएगा कि किसी सहारे की जरूरत हमें नहीं है, लेकिन सेटअप को सुधारने के लिए एक बार हम लोग रिजर्वेशन की मांग भी करते हैं। मैं रिजर्वेशन की पक्षधर नहीं हूँ, क्योंकि रिजर्वेशन ही अपने आप में
मुझे लगता है कि एक वैसाखी की ओर इशारा करता है, एक सपोर्ट की ओर इशारा करते हैं। लेकिन जब फॉर द टाइम बिंग अभी एक बार तो जरूरत है कि उस असेंबली में हम 50-50 आए, क्योंकि हम यदि आधी आबादी हैं तो आधी आबादी असेंबली और पार्लियामेंट में भी दिखनी चाहिए, और जब हम आधी आबादी होंगे तो अपनी बात भी पुरजोर तरीके से करेंगे। और राजस्थान मुझे लग रहा है कि टियर 1 में आने वाला है विमेन एंटरप्रेन्योर के रूप में, क्योंकि इसको अभी आप लोग मान रहे होंगे कि ये टियर 2 सिटीज में है, बट मैं नहीं मानती। बहुत सारी महिलाएं हैं यहाँ, आप भी बैठी हैं, जब कितना काम किया है आपने, कितना आपका बहुत सारा चीज सुनने पढ़ने को मिलता है। एक प्लेटफॉर्म मिलने की बात होती है, जो मैं आप सबकी बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने इसको लिया है और ग्लोबली हम लोगों को आप दिखाएंगी, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आई थिंक मेरी बात कितनों को समझ में आई, कितने को नहीं आई, लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि वी आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग गर्व कीजिए कि महिला हैं, आप लोग गर्व कीजिए कि बेटियां हैं। एक्चुअली में हम लोग वही कम मात खाते हैं जब ये फील करते हैं कि ओह हम लड़की हैं यार, कुछ नहीं कर सकते, या हम औरत हैं कुछ नहीं कर सकते। ये छोड़ दीजिए, क्योंकि मेरा बेसिक फंडा यही है कि इस पॉलिटिकल फील्ड में लड़ना बहुत टफ था। मैं सोचती हूँ कि वहां इतना आसान नहीं था पुरुषों से, लेकिन मैंने सोचा कि आई एम वेरी इंपॉर्टेंट। हर दिन मैं यही सोचती थी और अभी भी यही सोचती हूँ कि हमसे महान कोई नहीं, और वो हम करते चले जाते हैं, तो फिर सामने वाले को परास्त करना बहुत आसान हो जाता है। यदि आप पहले ही सोच लेंगी कि हमें तो सपोर्ट चाहिए बीइंग अ वीमेन, चूंकि आजकल बहुत एवरीवेयर ये साउंड आता है अपने पास कि हमें आरक्षण दीजिए, हमें सपोर्ट दीजिए, हम बहुत कमजोर हैं, हम भारत की नारी हैं, हमें सहयोग चाहिए, हम पे बहुत अत्याचार हो रहे हैं। ये बातें मत कीजिए, ये बंद कीजिए, इससे हमारी कमजोरी और बढ़ती है, घटती नहीं है। मैं हमेशा इसीलिए कहती हूँ कि हम लोग कहीं कमजोर नहीं है। और बहुत अच्छी स्टोरीज आप लाइए सामने, जो अर्चना और अब्रा लोग कर रहे हैं। ऐसे हजारों हजारों स्ट्रीट विमेन भी आपको मिल जाएंगी, गांव में मिल जाएंगी, विलेजर्स मिल जाएंगी। आपको एक छोटा सा एग्जांपल और मैं देना चाहूंगी, ताल छापर, एक जयपुर में एक छोटी सी जगह, राजस्थान की एक छोटा एक बिल्कुल छोटा कस्बा है, जहां महिलाओं ने कितना काम किया है। और आज इंटरनेशनल लेवल पे बीबी रसेल भी आई वहां, और सब लोग। लेकिन उन औरतों को मैं सलाम करना चाहती हूँ जो इंडिपेंडेंट, विदाउट सपोर्ट, विदाउट एजुकेशन एक बिजनेस को खड़ा करती हैं। और राजस्थान सरकार ने स्किल डेवलपमेंट के रूप में, और अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो मुद्रा बैंक हम लोग को इसमें बहुत सपोर्ट करने वाला है। अगर छोटे छोटे लोग जिनका बैकग्राउंड बहुत फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग नहीं है, वो लोग मुद्रा बैंक के माध्यम से भी स्टैब्लिश हो सकते हैं। और हम लोग सब, वो कहते हैं ना कि मेरा देश बदल रहा है, और आई होप कि हम सब बदल रहे हैं, और एक सुंदर युग की प्रारंभ हो रहा है जिसमें हम सब लोग विमेन एंटरप्रेन्योर के रूप में, क्योंकि इकोनॉमिकली जब तक हम लोग साउंड नहीं होंगे तब तक कोई हमें लिफ्ट नहीं मारेगा। ये बात फैक्ट है, कल भी सत्य थी, आज भी सत्य है ये, और यही हकीकत है। अब तक तो हस्बैंड हमें पैसा लाके घर में दे देते थे कि घर चलाइए, क्योंकि आप लक्ष्मी हैं, गृह लक्ष्मी हैं, आप होम मैनेजर हैं, हमारे पैसे को आप रन कीजिए। और हम लोग बहुत अच्छे से मैनेज भी करते हैं, जो कि IIM और कहीं के भी स्टूडेंट्स हो, लेकिन विमेन से अच्छी वो होम मैनेजर कोई नहीं हो सकती। ये मैनेजमेंट किसी कॉलेज, किसी इंस्टीट्यूट में नहीं सिखाया जाता है, जो इनहेरेंट हम लोगों में है। तो हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, और मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों ने जयपुर का चयन किया। और बीइंग जयपुर में के पार्ट होने के नाते आप सबको धन्यवाद कहने का मन करता है। मुझे ये भी दिल करता है कि 2 दिन है या 3 डेज है, 2.5 दिन है, 2.5 days आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे और बहुत कुछ सीख के जाएंगे। आप लोग की कोशिश को बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मुलाकात होगी। आप लोग जो कंक्लूड करेंगे इस सेमिनार में वो मुझे जरूर दीजिएगा, ताकि मैं उसको और अपलिफ्ट कर सकूं, जहां गवर्नमेंट में भेजना हो गवर्नमेंट में भेज सकूं। तो मुझे कंक्लूड रिपोर्टिंग मुझे जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। और आप लोग के पास आके, आप लोग के बीच आके मैं और इंस्पायर होके जा रही हूँ। रियली थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am, for enlightening us. Now I would like to call upon Mr. Arun Parekh, Executive Director, TIE Rajasthan, for the vote of thanks. Madam, for a gracious presence here today. Your presence and your address will definitely encourage our participants, ma'am. Just a small submission, you mentioned that the participation is low here. It's just because of the structure of the program which we have been prescribed from the US department. But definitely in our future endeavors, we will try to encourage and maximize the participation, ma'am. Thank you.
And I'll also like to thank Ms. Holly and Trista to be here with us and sparing their valuable time and experience with our participants. Definitely you will be enjoying your stay, and later if you get time to visit Jaipur and some sightseeing also, you will definitely enjoy it. Spend some money. Spend some money in Jaipur. बिल्कुल हमारा इकोनॉमिकली राजस्थान की टूरिज्म बहुत अच्छा है यहाँ. And thanks to Archana ji, Apra ji, Rajneesh ji, Mr. Ganesh, Dr. Pooja, all participants, and definitely my friend Sridevi, who has travelled from Hyderabad to help us for this program. Thanks to US Mission in India, US Department of State, who has supported and partnered with us for this particular program. And at last, but not the least, I would like to thank media, who has always been friendly for our initiatives. And with this, I would like to invite some questions from the press, ma'am, if you like. There's a question also, but we could take the question first and then probably. There's a question from some. If some participants have any question, they can ask first and later media. Later media. Okay. Right? So, how has your journey been in the US? Has it been any different from what women have to face here, or how's it been? So ventures and the successes and barriers for women in India. What I can say is that I spent a month last year in China mentoring women entrepreneurs, studying entrepreneurship, investment, and the impact of those things on women in China. And what I found is that I think it's a struggle globally in many ways. I think women have lots of roles aside from businesswomen and mothers and daughters and sisters. And I think that culturally those things are all continue to be challenges around the world. But I'm delighted and very hopeful from the progress. I see there are so many amazing things that women are doing across the world in terms of entrepreneurship, and in particular in mentorship. So as Oprah mentioned, the number of women who are then coming back to mentor others and inspire others. And where I also see a big difference is in the funding related to women entrepreneurs. So it continues to be a struggle for women to get funding at the same rate as men. And I think a lot of that is because the funding still happens for men. So I think there's a lot of progress that's happening there, and there particularly is a lot of progress in women that have had success as entrepreneurs coming back and helping to fund other women's projects. Thank you. So that was probably the last tweet that I did. Not all of us in the US are such big Twitter folks, but anyway, so that's exactly right. I would say that getting out there and doing things is really important, encouraging to not judge ourselves, which is something that we do really frequently, but to take a chance and take Difficult. So any insights on that front, the difference or the journey in US and India? I think I'll be more colleagues here to answer it. Now press can ask questions. If Can we have some press questions, please? डायरेक्ट माइक पे अपना सशक्त बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा प्रयास क्या कहोगे इस प्रयास के बारे में? देखिए, टाई वुमेन का ये प्रयास बहुत ही अच्छा है. 3 दिन के सेमिनार में यूएस और इंडिया के कोलैबोरेशन से ये लोग सिद्धार्थ एंड अपरा को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी मैं कि क्योंकि दुनिया से हम जुड़ रहे हैं. तो जब तक हम दुनिया को नहीं देखेंगे और दुनिया के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम और अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकते. बीइंग अ इंडियन, बीइंग अ राजस्थानी, हम लोग बहुत एक्सपर्ट हैं बिजनेस में. और बेसिकली मैंने इसीलिए कहा कि जितने भी बिजनेस इस्टेब्लिश हैं, अगर थे और हैं और हो रहे हैं, उसके बिहाइंड में महिला ही रहती है. इसलिए महिलाओं के सशक्तिकरण की जब भी बात हो तो महिलाओं को सबसे पहले अपने अंदर की ताकत को पहचाननी चाहिए. क्योंकि एक एग्जाम्पल भी मैंने 2 यहाँ दिए, चाहे वो सुधा मूर्ति का हो, चाहे लिज्जत पापड़ की ओनर का हो. तो हम लोगों ने इस चीज़ को शो किया है. और अब समय बदल रहा है, क्योंकि पहले हम घर में रह के बिजनेस को संभालते थे, घर को संभालते थे. अब हम इकोनॉमिकली साउंड होकर अपने नाम के साथ बिजनेस करना चाहते हैं कि आई एम द वुमेन एंटरप्रेन्योर. ये जो नाम हमें मिलेगा ये हमें ताकत देती है. कुछ नहीं बदला, महिलाएं पहले भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है. समय ज़रूर बदला है, इसलिए हमारे जो हमारे सीन्स हैं या जो हमारा अपीयरेंस है वो आपको बदला बदला लगता है. ताकत तो वही थी और आज भी और कल भी रहेगी. इससे मैं इन सबको बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ. और ये राजस्थान के लिए बहुत ही उपयोगी होगा कि जब बिजनेस के आदान प्रदान होंगे, अपने एक्सपीरियंस आदान प्रदान होंगे, अपनी कठिनाइयाँ आदान प्रदान होगी, तो मुझे लगता है एक अच्छा रिजल्ट हम सब लोगों को मिलेगा.
जाती है। ये मेरा कोई पार्टी का ओपिनियन नहीं है, ये मेरा अपना ओपिनियन है। पर टाइम बिंग अभी जो सिचुएशन कंट्री में बना है उसमें हमें चाहिए, हम यदि आधी आबादी हैं तो आधी आबादी को आधी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि पार्लियामेंट हो चाहे असेंबली हो, छोटी पंचायत में तो हमें मिल गई सरपंच से लेकर प्रधान और नगर निगम तक, पर ये बड़ी पंचायत में भी हमारी धमक दिखनी चाहिए, क्योंकि नीति नियंता जब तक महिलाएं पूर्ण रूप से नहीं होंगी, क्योंकि उस जमात में महिलाएं 2-4 होती हैं। समय बदल रहा है, मैं मानती हूँ कि पहले मिनिस्टर्स के रूप में 1-2 ऐसे विभाग दे दिए जाते थे जो महिलाओं के लिए होते थे, पर आज फॉरेन मिनिस्टर के रूप में सुषमा स्वराज हैं, राजस्थान में एजुकेशन मिनिस्टर के रूप में हमारी महिलाएं हैं। तो समय अब बदल रहा है, तो अगर हमें मिलेगा चांस असेंबली और पार्लियामेंट में तो नेचुरली बदलेगा देश, इसलिए ये सबकी डिमांड है। मजबूती तो आपने कहा पहले जो है आरक्षण नहीं था, लेकिन अब जो है आरक्षण आ गया है, उससे महिलाएं अब आगे बढ़ने लगी है। देखिए, मैंने बताया ना कि बहुत लंबी बात हो जाएगी आपसे अगर मैं उस पर बोलना चालू करूँगी, लेकिन सिचुएशन की डिमांड थी। महिलाएं नहीं चाहती आरक्षण, जो सिचुएशन कंट्री में बना उसके कारण हम लोगों ने आरक्षण की मांग रखी। क्योंकि अगर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि पहले भी सरपंच हुआ करते थे, और आज जब महिलाएं सरपंच बनी हैं तो गाँव को जाके देखिए, गाँव का दृश्य बदला है। आप लोग की तरफ से या लोगों की तरफ से आरोप जरूर लगते थे कि सरपंच पति है, महिला तो सरपंच नहीं है, पर मैं इसको डिनाई करूँगी कम्प्लीटली कि महिला सरपंच जो है आज पढ़ी लिखी हैं, उनको राजस्थान में जब एजुकेशन कंपलसरी हुआ तो दृश्य बदला है। तो एक महिलाओं में जो सिक्स सेंस होती है जो पुरुषों में नहीं होती है, मैं ये मानती हूँ, क्योंकि हम लोग बॉर्न एंड ब्रॉटअप आप लोग को करते हैं तो एक चीज़ अपने पास रख लेते हैं, वो हमारा सिक्स सेंस है, जो स्पेशल स्टिंग हमारे में है, वो इसीलिए हम स्पेशल हैं, और वो सब कुछ हम स्पेशल कर सकते हैं क्योंकि वो सिक्स सेंस हमारे पास है। मैम आप सुझाव दिए जाएंगे। देखिए, ये जो वर्कशॉप है ये टाई ग्लोबल ने ऑर्गेनाइज करी है, टाई राजस्थान के साथ मिलकर, और यूएस स्टेट डिपार्टमेंट, यूएस मिशन इसको बैक कर रहा है। और ये 2.5 दिन की जो यहाँ पर वर्कशॉप है, इसमें मेंटरिंग के बारे में बात की जाएगी कि किस तरीके से महिलाएं वो मेंटरिंग की टेक्निक सीख सकती हैं, किस तरीके से वो अपने स्टार्टअप कर सकती हैं, ऑर्गेनाइजेशन क्या इम्पॉर्टेंट है, लीडरशिप क्वालिटीज़, फाइनेंस को लेकर, लीगल इशूज़ को लेकर क्या क्या हमारी कंट्री में प्रोविजंस है, और किस तरीके से डिफरेंट वेबसाइट्स हो या डिफरेंट लोगों से वो कंसल्ट कर सकते हैं। क्योंकि एक लीडर को फॉलो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक मेंटोर को फॉलो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीज़ें हमको मालूम है, पर उनको सही डायरेक्शन में और सही दिशा में किस तरीके से उपयोगी बना सकते हैं, ये 2.5 दिन में इनको बताएंगे। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप्स, जो पीआर की बात करते हैं, पब्लिक रिलेशंस, किस तरीके से नेटवर्क बिल्डिंग बताएंगे, ये आपस में नेटवर्क बिल्ड करेंगे, जो इंटरनेशनल मेंटर्स आए हैं उनसे नेटवर्क बिल्ड करेंगे, और उसको वो फिर आगे लेकर जाएंगे। तो मुझे लगता है 2.5 दिन की वर्कशॉप के बाद जब जो लास्ट सेशन होगा, और ये लास्ट डे अपना एक बिजनेस प्लान भी ये लोग सब सबमिट करेंगे, और उसमें से फिर 5 लोगों को ये लोग सिलेक्ट करके आगे मेंटरिंग और ज़्यादा देंगे। तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छा प्रयास है टाई का, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का, एक 2.5 दिन की वर्कशॉप राजस्थान जयपुर में किया जाए। और हम बहुत शुक्रगुजार हैं सुमन जी का कि वो अपने टाइम निकालकर यहाँ पर आई और उन्होंने बहुत अच्छी बातें शेयर करी हमसे। हो गया था लोकेश तुम्हारा प्रोग्राम करना है, और उनके लिए जयपुर वन ऑफ द टॉप सिटीज़ थी, और वो चाहते थे कि जयपुर की महिलाएं एनीवे काफ़ी फॉरवर्ड हैं, और यूएस से 2 मेंटर्स भेजे थे, और लोकल मेंटर्स को साथ में ग्रुप बना के लेडीज़ को आगे बढ़ने की क्षमता, कई स्किल्स सिखाना चाहते हैं जो मिसिंग हैं। वो चाहते हैं इनके बिजनेस प्लान एकदम रियल हो जाएं, ये बिजनेस में सक्सेस करें और दुनिया भर में नाम रोशन करें। इस प्रोग्राम में बड़ी सरलता से 25 महिलाओं को सिलेक्ट किया गया है, काफ़ी महिलाओं को शॉर्टलिस्ट करके, और पर्पज़ ये था छोटा ग्रुप का कि 1-on-1 मेंटरिंग मिलेगी। अगर बहुत बड़ा ग्रुप होता है तो बड़ी मुश्किल होती है और सबको खाली एक स्पीच मिल के रह जाती है। ये 25 महिलाओं का ग्रुप्स हम चालू कर रहे हैं, ये शुरुआत है, और इस तरह के कई प्रोग्राम्स हम बैक टू बैक रेगुलर करेंगे। देखिए उसको आगे स्पेशली सुमन जी वेरी वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन कीपिंग द वुमेन इन द सिटीज टुगेदर। वी हैव रियली लेड बाय powerful person, somebody who is responsible to reach there
inspired Oh so my many. goodness. बहुत ही अच्छा, अरे ठीक है नहीं बहुत अच्छा था। नहीं मैम आपका क्या है just like Prime Minister Modi you connect Yes. you connect The way you talk, the way you talk. you're not talking from a book you're talking from the heart हाँ बिल्कुल देखिए मैंने बहुत दिल से बोला आपको मन की बात मन की बात one more fascinating thing about what he said is don't feel victimized, feel empowered. I think that's And you told that in a nice way that everybody understands. Yes, absolutely. Right? जब देखो we listen to all kinds. media is organizing this Women International Day लेकिन हम अपने आप को शो कैसे करते हैं हम बहुत कम यार हम देने वाले लोग And is it, are you located here? When did you start this? Rest of India, it is going to be dominated by And sure we will try to promote this. We have got local Rajasthan, now we will based in there. We will also work with UNE. So this is a youth organization. We've been working with the group of volunteers. So Corona we are moving this program. Under the guidance of the board, directly we are going to have this program. India Youth Advocacy Solution. I try to